अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जब आपने दुआएं मांगनी है उसमें आपने हमें भी ज़रूर याद रखना है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश के बारे में यही सोचते थे, लेकिन ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए है जो बांग्लादेश के बारे में ऐसा सोचते थे। तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, Nightfall, it's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's back-minded, third world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. First up, I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the 2 billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan, and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy to keeping peace, Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the 3rd largest military in South Asia. Now, Nightfall, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the 2nd poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only 3 years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengal certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland, a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit to countries for their positives. Bangladesh may be a young country. And of course, it has so many things to work on. I could literally make a full video based on just the negatives, but why would I do it? There are so many people already who just focus on the negatives.
this video is different. The fact that Bangladesh managed to become one of the fastest growing economies, literally from being the second poorest country in the world, May Bangladesh be the voice of all the underrated nations that are on the way to the top. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे लोगों का अभी भी बिलीव है कि बांग्लादेश जो एक पुअर कंट्री है, वहाँ पे जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, जैसे कि उन्होंने वीडियो में भी बताया कि बांग्लादेश जो सेकंड नंबर पे आता था पुअरेस्ट कंट्री में, उन्होंने अपनी इकॉनमी को कैसे राइज़ अप किया और उसके अलावा वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हुई। और जैसे कि उन्होंने बताया टेक्सटाइल सेक्टर में भी बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। तो सबसे मज़ेदार कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये भी बांग्लादेश की वजह से ही था कि बांग्लादेश के जो एक बांग्लादेशी जर्मन जो थे जावेद करीम, वही यूट्यूब के जो हैं वो फाउंडर थे। तो बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है ये। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमें ये बात पता चली थी कि बांग्लादेश का ही थे जिन्होंने यूट्यूब बनाई थी। तो ये तो बहुत ही सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट यही है जी। तो फ्रेंड 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो दुनिया की सेकंड पूरेस्ट कंट्री थी और 1.5 मिलियन लोग भूख से मार गए थे। और उस टाइम हेनरी किसिंगर जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने भी बोला था बांग्लादेश बास्केट के सही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन आज सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। जब हम देखते हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया से भी पर कैपिटा इनकम में आगे चला गया। पाकिस्तान से तो बांग्लादेश की इकॉनमी ज़ाहिर बात अब बहुत ज़्यादा आगे चली गई, आप सब लोग जानते होंगे। तो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है ये सारी चीज़ें देख के। इसमें पूरी कौम की मेहनत है जिस वजह से बांग्लादेश आज इतना ऊपर चला गया। उन्होंने बताया मसले अभी भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। तो पॉजिटिव बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। बांग्लादेश की इकॉनमी से आज लोग सीख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम जो अखबार है उसने भी बोला है कि अगर जो बाइडन जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने इकॉनमी को ठीक करना है, गुर्बत से छुटकारा पाना है, तो बांग्लादेश से सीख। मैं यही चाहूँगी कि सीरियसली में बांग्लादेश ने जिस तरह से ग्रो किया है, जिस तरह से हर सेक्टर में उन्होंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हैं, पाकिस्तान भी जो है वो इस तरह से अचीवमेंट्स हासिल करे और पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट है वो बेहतर इकदाम करे। तो वीडियो तो हमें बहुत अच्छी लगी। आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अपनी वीडियो रिकमेंडेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।